मु शक्ति प्रसाद मो चैनल शक्ति एजुकेशन को समस्त स्वागत। ए वीडियो में डिस्कसन करवा ए लेटर टू गॉड चैप्टर एमसीक्यू पाखापाखि 120 एमसीक्यू तो टिके टाइम लगे तेणुक वेट करके धैर्य सहित देखा। तो वीडियो डिस्कसन करने समस्त घर समस्त वीडियो को लाइक करदे सांग मान सहित सेयार कर जो मैंने प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे बेल आइकन को प्रेस करदे। ता सहित सबुदिन राति 9टा PM क्लास हो लाइव क्लास हो समस्त है क्लास करवा। A letter to God was written by क्या द्वारा लिखा है ना GL Fluents. People believe that faith can move mountains. Then देखिए which question does the story A letter to God delicately pose को question दा it answer option है what should we put our faith in. Then देखिए question of GL Fluents was born in केबे जन्म होते GL Fluents it answer of 1895 option D. GL Fluents was awarded dash Nobel Prize, the Booker Prize, the Grammy Award, National Prize of Arts and Science. it answer होगा National Prize of Arts and Science. Then देखिए हमें 6 नंबर many of GL Fluents works are concerned with the oppression of dash. it answer होगा Americans. Then देखिए GL Fluents was a dash novelist, poetist and journalist. it answer होगा 7 option A Mexican. GL Fluents started writing at the age of केते वर्ष से मैंने writing start करते 15. GL Fluents started writing when the dash began. it answer होगा 9 number ना Mexican Revolution option B. The story is written by GL Fluents are केमती का सब स्टोरी गुड ना ऑप्शन बी होगा एक्साइटिंग एंड ह्यूमरस. 11 देखिए हमें when Lenko told his wife about his prediction of rain she was preparing कौन से प्रिपेयरिंग करथिला ना प्रिपेयरिंग सफा ऑप्शन सी. आफ्टर द हेलस्टॉर्म द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द डैश प्लांट्स ट्रेज क्रॉप्स ब्रांचेस. एटी आंसर 12 नंबर ऑप्शन ए प्लांट्स. हाउ मेनी हाउसेस वेर देयर इन द वैली केते हाउसेस थिला. एटी आंसर ऑप्शन बी ओनली 1 हाउस. व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम लेंकोस हाउस टू कौन देखिए होथिला ना आंसर ऑप्शन सी बोथ है माने रिवर द कॉर्नफील्ड दिटा को. देन देखो लेंकोस हाउस वाज डैश ए लो हिल. it answer होगा 15 देखो ना at the top of. the expression dotted with the flowers means that ता means होला कौन ऑप्शन है flowers scattered all over the field. 17 देखिबा what did the earth need it answer होगा 17 ऑप्शन डी a downpour or at least a shower. Lenko knew his field intimately. this sentence implies that a sentence ता कौन implies करछु ना it answer होगा ऑप्शन बी had a detailed knowledge about the field. देन देखिए which direction did Lenko look expecting rain को direction से expect करथला नॉर्थ ईस्ट. Lenko could not do anything throughout the morning because कहीं से किछ कर पार नथला ना he eagerly waited for the rains. 21 देखिबा who was working in the field when it started raining it answer होगा the older boys. then देखिबा in response to Lenko's prediction of rain his wife said dash ता wife कोन कहतला ना yes God willing. 23 देखिबा what could be seen approaching in the northeast it answer over 23 option D huge mountain of clouds. then देखो 24 when big drops of rain began to fall Lenko went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. then देखो 25 the expression huge mountains of cloud means ता अर्थ लगा 25 ऑप्शन ए हबो clouds as big as mountains. then देखो what made Lenko exclaim that the raindrops were new coins. it answer over 26 option C they were as precious as coin. then the word according to Lenko were 10 cent coin. it answer over 27 option B big raindrop. then देखिए word according to Lenko were 5 cent coin. 5 cent coin है लगता है आंसर होगा ना little raindrops. 29 देखिए the expression trapped with a cotton of rain in the word trapped means लगा 29 है ना covered. then देखिए हमें 30 what truly resemble new silver coin. it answer of 30 रो ना hailstone. the boy ran out to collect the frozen pulse. what the frozen pulse refer to here frozen pulse कहा गोटे रेफर होची तो 30 रो आंसर होगा ना hailstones. सॉरी 30 वाला frozen pulse अटी कहा को रेफर करूची अटी लेंको हिमसेल्फ सॉरी भूल कहली hailstone एटा hailstone. then देखिबा it is really getting bad now who said this एटा की कहतला लेंको हिमसेल्फ कहतला. how long did the hailstorm continue hailstorm के समय पर्यंत कंटिन्यू हेतला ना for 1 hour option B is the correct answer. then देखिबा the field was white as if covered with dash 34 answer कोन option D salt. the storm filled Lenko's soul with dash it answer 35 ना sadness.
What does the expression a plug of locusts means? A plug of locusts means माने कौन? 36 ର आंसर होगा ना insect which fly in a big group and destroy a crop. A plague of locusts would have left more than this. जो रेन हेतला हेस्टॉम पड़ी के ता शस्य क्षेत्र सब नष्ट हो जायतिला से कहतिला कि माने लोकस्ट ते आसिन ताटू कम हेतांता. This sentence implies that the locust कोन हेतांता? The locust would have destroyed less than the hailstorm. ताटू कम करथान से. To whom did Lenko say that they would have no corn that year? To himself, to his son, to his wife, to all the members of his family. It is answer of option B, to his son. Then देखिए हमें 39. Not a leaf remained on the trees. What does the sentence mean? ये sentence रो mean कौन? It is answer of 39 रो option D. The trees lost all their leaves. 40 देखिए मैंने 40 देखिए हमें all our work for nothing. What does this statement mean? ये statement का अर्थ होला कौन? ना their hard work turned fruitless. Lenko family hoped help from dash. How to say help माने God. Lenko advised the member of his family not to be कोनाठी not to be it answer of कोना upset. Option C. According to Lenko, God sees dash. God sees everything. Then देखिए 44. Which word has been used in the story a letter to God to mean an inner sense of right or wrong? It answer of कोना 44 ना conscience. Lenko was an oxman. What does the statement mean? The statement अर्थ होला कौन? He worked very hard like an animal. 46 से में देखिबा. After the storm had passed, Lenko wrote a letter to God. Dash. मान केबे लिखिला ना the following Sunday. Option D. 47 देखिबा. At what time did Lenko write a letter to God? It answer of 47 no. At daybreak. How many pesos did Lenko needed from God? कहते हैं 100. Then देखिबा हमें What will Lenko do with the pesos sent by God? से तेरे कौन करियो बोले ना all of the above होगा. He would feed his family. He would sow his field again. He would live until the crop comes. What did Lenko write on the envelope? कौन लिखते हैं ना to God. 51 देखिए हमें. After writing God's address on the envelope, Lenko put the letter inside her. Here inside refers to कौन? इट inside है लगा को refer करते ना the envelope. Option C. While going to the town, Lenko was still dash. It answer कौन बा 52 ना still troubled. 53 देखिए what did Lenko do before dropping the letter into the mailbox? It answer कौन बा ना placed a stamp on the letter. Option B. Then देखिए what was the reason for the postman's hearty laugh? कहीं से हंसी दिला बहुत जोर है. The letter was addressed to God. He had never known that address. Nobody was sent letter to God. एटा तीनटा को तेणु ऑप्शन डी. 55 देखिबा. Which word has been used in the story to mean friendly and pleasant? It answer कौन होगा 55 रो ऑप्शन सी amiable. Amicable ना amiable. Who according to the author was amiable? It answer होगा 56 रो ऑप्शन सी the postmaster. 57 देखिबा. Immediately after laughing loudly, the postmaster turned serious. Why? कहीं turned serious जाइतला ना because he thought of an idea not to shake Lenko's faith in God. Then the 58. What was the postmaster's comment on Lenko's letter to God? It answer कौन हो? What faith? Option A. The postmaster thought seriously on dash. Seriously कहाँ से ना Lenko's faith in God. Option C. 60 देखिए हमें. The postmaster broke out laughing but almost immediately से कौन होता है ना turned serious. टिके थी क्लैरिटी फॉल आसुन तो जिनको एडजस्ट करना उठिला उठिन भल से. 61 देखिए the postmaster wanted to write a letter to Lenko. इट आंसर होगा 61 कौन ना not to shake his faith in God. Then देखिए to answer Lenko's letter the postmaster needed कौन है इट आंसर होगा 62 रो ना समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर माने मनी बेसिकली व्हाट डज समथिंग मीन इन द एक्सप्रेशन समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर संग कहले इट आंसर होगा 63 रो मनी. देन देखिबा व्हिच सोर्स डिड द पोस्टमास्टर अरेंज द मनी फ्रॉम कोड से अरेंज कला पैसा ना हिज सैलरी हिज एम्प्लॉयज एंड हिज फ्रेंड्स. देन देखिबा द पोस्टमास्टर्स फ्रेंड वर ऑब्लिगाइज्ड टू गिव मनी फॉर एन एक्ट ऑफ कौन एन एक्ट ऑफ 65 आंसर was charity. The postmaster's resolution was dash. The postmaster's resolution was dash now to answer Lenko's letter. Then देखिए 67. How much money was the postmaster able to send to Lenko? The answer was 67 option D. A little more than half of the money he wanted. The letter sent by the postmaster contained dash. कौन contain करते हैं ऑप्शन ए सिंगल वर्ड.
इन द लेटर टू लेंकोस द पोस्टमास्टर रोट डैश एज ए सिग्नेचर ये आंसर कौन 69 गॉड 70 देखा आम द पोस्टमास्टर सेंड लेंको ए लिटिल मोर देन हाफ हियर मोर देन हाफ रिफर्स टू 70 पेजेस माने मोर देन 50 नॉट 100 ये आंसर कौन हम ऑप्शन ए मोर देन 50 पेजेस देन देखिबा द फॉलोइंग सडे लेंको केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू माने कलेक्ट द मनी सेंड बाय गॉड 71 ओ सॉरी कलेक्ट द मनी नो एटी कोन आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम तापे लेटर आछि कि नै देन देखिबा 72 हु हैंडेड ओवर द लेटर टू लेंको के लेंको को लेटरटा देथिला द पोस्टमैन ऑप्शन बी व्हाइल द लेटर वाज बीइंग हैंडेड ओवर टू लेंको द पोस्टमास्टर ऑब्जर्व हिज कोन तार कोन ऑब्जर्व करथिले ना कंटेनमेंट अकॉर्डिंग टू द पोस्टमास्टर लेंको परफॉर्मड ए डैश लेंको कौन परफॉर्म करथिला ना गुड डीड 7 माने ऑप्शन सी ऑफ 74 75 देखो ऑन सीइंग द मनी लेंको डैश वाज सरप्राइज डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज बिकेम वेरी हैप्पी लैंग्वेज हेटिली इट आंसर ऑफ कौन 75 रो ना डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज देन देखिए लेंको बिकेम एंग्री व्हेन से केतला एंग्री है से काउंट कला मनी कि 100 पेज जागा 70 पेज आसी तले कौन हो एठी 76 रो ही काउंटेड द मनी तले काउंट कला लेंको थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक व्हेन ही डैश माने कोन तले पैसा देबार काउंट माने 77 रो काउंटेड द मनी माने केते बेले क्वेश्चन देखा अछि कोन लेंको थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक व्हेन ही काउंटेड द मनी तले पैसा कोन कि देबार ऑप्शन सी हबो व्हेयर डिड लेंको राइट हिज सेकंड लेटर टू गॉड कोन थिला केबे ना ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल कोड से गला एटा लिखला लेंको रोड द सेकंड लेटर टू गॉड विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो बिकॉज ऑफ हिज डैश ओल्ड एज पुअर आई सेड फॉरगेटफुलनेस एफर्ट टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज कौन है 79 रो ना एफर्ट टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज देन देखिए 80 आफ्टर बाइंग द स्टाम्प लेंको डैश इट फास्ट इट आंसर कौन 80 रो ना लीक्ड लेंको अफिक्स द स्टाम्प टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज कौन फिस्ट 82 देखिपा व्हेन डिड द पोस्टमास्टर ओपन लेंको सेकंड लेटर टू गॉड कौन है ना ऑप्शन सी द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स बोला सांग देखिले इन हिज सेकंड लेटर लेंको रोट टू गॉड दैट ओनली डैश पेजेस रीच्ड हिम 83 आंसर ऑफ ओनली 70 इन हिज सेकंड लेटर लेंको रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम कौन ऑप्शन सी द रेस्ट ऑफ द मनी ही वांटेड देन देखिए लेंको रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द मेल बिकॉज कहीं कि ना ऑप्शन सी हो ही सस्पेक्टेड द ऑनेस्टी ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज 86 देखिए अकॉर्डिंग टू लेंको द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेर बंच ऑफ क्रुक्स माने डिसऑनेस्ट पर्सन हम 86 आंसर ऑफ ऑप्शन बी एट द एंड ऑफ द लेटर लेंको रोट लेंको आज इज कौन नेम सिग्नेचर एड्रेस आइडेंटिफिकेशन सिग्नेचर देन देखिए हम 88 फेथ कैन मूव माउंटेन्स दिस एक्सप्रेशन हैज रेफरेंस टू कौन हो ऑप्शन बी लेंको स्टीप फेथ इन गॉड देन देखिए 89 में द मेन थीम ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज डैश कौन ना ऑप्शन डी होगा लेंकोस कंप्लीट फेथ इन गॉड देन देखिए द एक्सप्रेशन गॉड विलिंग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डैश इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश और होप देन देखिए आफ्टर इट हैड रेन्ड फॉर 1 आवर द फील्ड वाज व्हाइट बिकॉज इट वाज फिल्ड विथ डैश इट आंसर कौन ऑप्शन सी हेलस्टोन्स कही मैंने बाटी भिड़ा गले 90 क्वेश्चन हो पाखापाखि गोटे मिस्टेक हो जाए पढ़ला व्हाट ट्रुली रिजेम्बल्ड न्यू सिल्वर कॉइन इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड ये आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी वेरी लार्ज हेलस्टोन देन देखिए इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ लेंको सेड दिस व्हेन केतेबेले से कहला जेतेबेले वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल लेंको वाज एन ऑक्स ऑफ मैन बट स्टिल ही न्यू से कौन जानता हाउ टू राइट देन देखिए व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मास्टर वाज एन अनबिलीवेबल फेथ कोटा भितर हम ऑप्शन प्रथमटा स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड देन देखिए व्हिच मिस्टेक अकॉर्डिंग टू लेंको कुड नॉट गॉड हैव मेड इट आंसर कौन 96 ना सेंडिंग हिम लेस मनी 70 पेज थे टू मेक द गम ऑन द रिवर्स ऑफ द स्टाम्प वेट लेंको डैश इट लीक्ड इट व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट इट आंसर कौन हम ऑप्शन डी द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न 19 देखिए आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर हु सेड दिस एटा की कहतला ना द पोस्टमास्टर द लेटर हुइज द पोस्टमास्टर सेंड टू लेंको कंटेंट कोन गोटे सिंगल वर्ड थिला तेणु कर आंसर ऑफ ऑप्शन ए 101 देखिबा आई होप इट पासेस क्विकली व्हाट डज इट रेफर टू एटा कोन द हेलस्टोन नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन
द वोमेन इन द सेंटेंस लेंकोस कौन ना वाइफ 103 देखिए आम द पोस्टमास्टर ब्रोक आउट लाफिंग एंड टर्न सीरियस व्हेन ही realized the correspondence had such firm faith in God. According to Lenko, God eyes sees everything, even what is deep in one's community. Answer कौन बस अच्छा है conscience. When the raindrops began to fall, the air became fresh and sweet. Then देखिए 106. What were the younger boys doing when the mother was preparing supper? ये आंसर कौन बस 106 ऑप्शन सी they were playing near the house. 107 देखिए Lenko's prediction of rainfall was dash. ये आंसर कौन 107 करेक्ट. द पोस्टमास्टर वाज ए डैश ये आंसर कौन फैट एंड एमिएबल. 109 देखिए द नाइट आफ्टर द हेल हैड रेन्ड वाज डैश ये 109 आंसर कौन हम सरोफुल. लेंको कन्सिडर्ड द रेनड्रॉप्स एज ए डैश ये आंसर कौन 110 ऑप्शन डी न्यू कॉइन्स. देन देखिए हु वाज ऑल रिफर टू द फ्रेज हार्ट्स ऑफ ऑल ये आंसर कौन हम ऑप्शन सी पीपुल इन जनरल. 112 देखिए व्हाट डज पेजो मीन्स है कौन ना गोटे कोरिया मर्जन रूपी अच्छी लैटिन अमेरिका रे. 112 ऑप्शन बी हम ये करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. व्हाई डज द ऑथर राइट द हाउस बट नॉट ए हाउस एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी लेटर टू गॉड कहीं लिखते इट वाज द ओनली हाउस फाउंड इन द एंटायर वैली. 114 देखा व्हिच स्टेटमेंट जस्टिफाइज लेंकोस डीप फेथ एंड कॉन्फिडेंस हेल्प हिम ओवरकम हिज मिसफॉर्च्यून इन द लाइट ऑफ द स्टोरी लेटर टू गॉड ये आंसर कौन हम ना ऑल ऑफ द एबव हम. द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू आंसर लेंकोस लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड. ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स टू हेल्प हिम. देन ही सेंट 70 पेजेस लेंकोस ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड. 115 देखिए गॉड सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच रोट हियर द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स रेस्ट माने कौन जो 30 पेजेस तेरे बड़ी 100 रु 70 देथिले ना. What thought reflects Lenko's confidence in God when he received only 70 pages? माने आंसर कौन बैठी God could not have made mistake. Then देखिए 117 apart from the crest of a low hill, Lenko's house stood in the middle of the valley. 18 देखिए the postman went to his boss or postmaster laughing heartily and showed him the कौन से जो करते ना letter to God. देन देखिए 119 जॉर्ज लॉपेज फ्लुएंस वाज अवार्डेड डैश इन 1935 कौन से नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस. लास्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट विल मेक्स लेंको सेज हिज फैमिली नॉट टू बी सो अपसेट ना ये कौन ना नो वन डाइज ऑफ हंगर. बहुत कष्ट करी भिडियोटा कली 120टा क्वेश्चन भिडियोटी भल लगे समस्त वीडियो को लाइक करदेव आउ सबुन राति 9टा लाइव क्लास अच्छी क्लास करें ता सहित टेलीग्राम ग्रुप अच्छी कम मैंने डिस्क्रिप्शन दे जॉइन हो जहाँ टेलीग्राम व्हाट्सएप जॉइन हो. थैंक यू.